सो गाइस वेलकम अगेन वेलकम टू जेसी एकेडमी एंड यस इंटरव्यू के डेट्स आ गए हैं और आज जो है आप अपने एडमिट कार्ड्स जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है डाउनलोड कर सकते हैं राइट। 27 से लेकर ऑलमोस्ट 3 मार्च तक जहां तक मुझे पता लगा है आईबीपीएस एसओ marketing officer के interviews lined up है right. And this video is very important because in this session we will be covering 45 most important FAQs that you need to cover if you're appearing for the marketing officer's interview right. So इस पूरे session में I'm going to take you through those 45 questions and I'm going to give you some idea about how you can address those questions. Why not an exact idea? Because answers would vary from person to person. और अगर आप मेरे वीडियो कोर्स का अगर आप इंटरव्यू के कोर्स का हिस्सा है तो वहां तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट आई थॉट कि यूट्यूब पे भी मैं एक सेशन लेके आऊं जहां पर हम एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू डिस्कस 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। So I'm going to take you through questions one by one, and I'm going to give you a glimpse about. I'm going to give you an idea about how you can prepare around that, right? So tell us about yourself. This is majority of the times your interview is going to get started with this question. तो पूरी संभावना है कि आपका इंटरव्यू यहाँ से शुरू होगा और अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करके लेके जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा हेड स्टार्ट मिलेगा इंटरव्यू में राइट। सो मेक श्योर व्हेन यू गिव योर इंट्रोडक्शन तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, टेल देम अबाउट द सिटी यू कम फ्रॉम, गिव देम एन आइडिया अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी एंड देन व्हाट यू डूइंग एट प्रेजेंट। एंड इफ यू फील लाइक यू कैन आल्सो टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड interests. This is the idea that you can talk about. Second question is, which subjects did you study in MBA? Yes, many a times because it will be a special case in your case since you're going for a specialist officer's job. तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। Sometimes you can also ask you about your favorite subjects in your MBA. तो आपको आपके सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, खास तौर पे अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए जा रहे हैं तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग सर्विसेज मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग मार्केटिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हों थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उनको थरली देख लीजिएगा, उनके टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स को देख लीजिएगा और की कंसेप्ट्स को देख लीजिएगा राइट। व्हाट एल्स? The third thing is, why did you opt for marketing officer as a major subject in MBA? Majority of you, many of you would be having dual specialization, marketing with IT, marketing with HR, marketing with finance. तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने मार्केटिंग ही क्यों ऑप्ट करा एज अ मेजर सब्जेक्ट, या फिर आप मार्केटिंग ऑफिसर की तरफ से क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, व्हाई नॉट फॉर एचआर ऑफिसर। सो यू शुड बी हैविंग एन आंसर रेडी फॉर दिस। अब यहाँ पर आप थोड़ा यू कैन टेल देम अबाउट योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग, that you wish to go out, you wish to meet people, you are comfortable speaking to them, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। The fourth question is, what is the difference between sales and marketing? Yes, because many a times, when we talk about marketing, we just talk about marketing, but sales is a part of marketing, right? And majority of times it will be expected from you to take care of sales also in the banks, and that is why they will be very much keen in understanding and learning from you that कहीं आप ऐसा तो नहीं कि केवल मार्केटिंग का ही सपना लेके जा रहे हो और सेल्स भी आप ही को करनी है, राइट? तो बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस दे कम टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सेल्स को मार्केटिंग से अलग मान के चल रहे हैं या उसका हिस्सा ही देख रहे हैं। तो व्हेन यू आंसरिंग सच क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज से दैट सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एनीबॉडी हु इज बेसिकली looking into marketing will imperatively will obviously will be taking care of sales also, will be looking at sales also। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज another important question is, what is the role of a marketing officer in a bank? मैंने ऑलरेडी अपने पास्ट के कैंडिडेट्स पुराने स्टूडेंट्स के जो अब मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं जिनको 1 साल 2 साल 3 साल भी हो गए हैं काम करते हुए, उनके कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। एक सरप्राइज वीडियो आपको मैं कल फिर से डालूंगा जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी मार्केटिंग ऑफिसर हैं, शुभम गुप्ता। उनका वीडियो आपको कल या परसों मतलब 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा और वहां पर भी वो आपको काफी सारा इनपुट देंगे कि किस तरीके का मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल होता है। प्रीवियस वीडियोस भी हैं तो आप इसी चैनल में सर्च कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस, और इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक लगा दूंगा एंड स्क्रीन में, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ अ मार्केटिंग ऑफिसर इन अ बैंक। Apart from that, what is the role of a how is a marketing officer's role different than a probationary officer in a bank? Now,
फॉर देम टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट आप एक मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए आए हो, दैट इज नॉट अ डेस्क जॉब. You will not be expected to be in the branch all the time. You will be moving out of the branch, you will be meeting customers, you will be interacting with a lot of clients, and that is a part of your job profile, right? तो आपको इस बात का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर और एक मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से एक पीओ का रोल और मार्केटिंग ऑफिसर का रोल अलग अलग है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के होते हैं. सो गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू. Before I take any further, just a small input that I have designed a complete interview course जिसमें कि हमारे लाइव सेशंस भी हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं. रिकॉर्डेड सेशंस ऑलमोस्ट सारे ही हमने अपलोड कर दिए हैं. लाइव सेशंस हम स्टार्ट करेंगे 18th ऑफ फरवरी से, और इसमें हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक बैंकिंग बताएंगे, और मैं भी कुछ लाइव सेशंस लूंगा. इसमें मैं आपको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस का भी आंसर आपको बताऊंगा. I'll tell you how you should be answering these questions that we're discussing over here in this video. Apart from that, we will be conducting classroom mocks. ये भी जो है 18 से स्टार्ट होंगे, and almost every day or maybe alternate days I will be taking classroom mocks. I will be taking mocks over Zoom or Google Meet, जहां पर candidates can see other candidates giving an interview, right? Apart from that, I will also be taking one face-to-face personal interview with you over Google Meet or for Zoom. And then the classes are bilingual, and I have recorded sessions in a way that both Hindi and English medium students can easily understand what I'm trying to say or what is being told, right? Apart from this, there are some notes also, quick revision के लिए वो भी available हैं, और भी छोटे मोटे tidbits आपके सामने हैं. तो इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सारी जानकारी इंटरव्यू की मिल जाए. We have a course for you. Coupon codes are already there, so you can check the link in the description. Chalo ji, let's continue with question number 7. What are the various marketing activities that a bank does? तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है बैंक्स में, किस किस तरीके के एक्टिविटीज होते हैं. रूरल एरिया में कैसा एक्टिविटी होता है, अर्बन एरियाज में कैसा एक्टिविटी होता है. मेनी अ टाइम्स बैंक एंगेज इनटू स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, लोन मेलाज हम लगाते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग इवेंट्स में. तो बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट कैन बी आस्क्ड, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज रूरल मार्केटिंग. जी हाँ, majority of the public sector banks will have branches in urban and semi urban and rural areas also, स्पेशली रूरल एरियाज है, बिकॉज रूरल एरियाज में अभी भी मार्केट का बैंकिंग का पेनिट्रेशन उतना नहीं है, एंड देयर इज स्टिल स्कोप फॉर बैंक्स टू गेन गुड ग्राउंड इन बिजनेस. सेमी अर्बन और हल्का सा रूरल एरिया में जाकर कर सकते हैं. तो दे विल बी वेरी मच इनटू, वेरी मच विलिंग टू अंडरस्टैंड कि आप रूरल मार्केटिंग या रूरल कनेक्ट आपका कितना है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग. तो बी प्रिपेयर्ड. और किस तरीके के रूरल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हैं अर्बन एरियाज में जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उससे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? इसके अलावा व्हाट, व्हाई डू बैंक्स नीड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? व्हाई इज अ डेडिकेटेड marketing or a sales team needed, right? So you should have a solid answer behind that. Why? Because here you'll be justifying your very own job profile, right? तो आप अपनी job profile यहाँ justify कर रहे होंगे, which is very very important. Let's move to question number 10. Why should you define a how should you, sorry, how would you define a satisfied customer in a bank? तो आपको कैसे पता लगेगा या आप कैसे बताएंगे कि कोई कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इनको आंसर कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से सामने वाले पैनल मेंबर्स को आप कन्विंस कर सकते हैं. एक इनपुट मैं आपको देता हूँ कि सर, कस्टमर का मुझसे या बैंक से इंटरैक्शन कितना है, किस क्वांटम का बिजनेस है, किस फ्रीक्वेंसी में कस्टमर इंटरैक्ट करता है, उससे हमको एक आइडिया लग सकता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, कस्टमर किस तरीके का रिलेशनशिप हमारे संग मेंटेन करता है, हम उससे इनपुट्स या रिव्यूज भी ले सकते हैं, हम उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं. तो इस तरीके से यू कैन बिल्ड योर आंसर अराउंड दिस क्वेश्चन. Another question is, what is the importance of cross selling in a bank? Banks engage into a lot of upselling and cross selling. Cross selling is very very important, right? Specifically when a customer is an account holder and you want to sell him other products like credit card, insurance, mutual funds, or maybe other services, then what is the importance and why is it important for banks to cross sell a product? तो
अपना फी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने के लिए, ये सब बातें यू कैन टेल इन दी पैनल. Next question that can be asked is, what is the role of digital marketing in banking sector? Now, this is a very promising area where you guys can discover a lot of things. And banks, I was just having a look at some वीडियो ऑन यूट्यूब में मैंने देखा कि फेडरल बैंक के बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव से एडवर्टीजमेंट्स आई वाज सीइंग. हालांकि आप देखें, छोटा सा बैंक है बट फिर भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर रहे हैं. और भी बहुत सारे बैंक्स के मैंने डिजिटल एफर्ट्स देखे टुवर्ड्स मार्केटिंग. तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक्स किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को एज ए टूल यूज कर रहे हैं और किस किस तरीके से दे आर रीचिंग आउट टू कस्टमर्स डिजिटली ऑनलाइन, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस. Next question is, where do you see yourself 5 years from now? They want to understand your growth trajectory. किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ को परसीव करते हैं? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? अगर आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जॉब करते हैं तो आपको क्या पता है कि किस लेवल में प्रमोशन होता है, या आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ जाएंगे? एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तो वो ऑफिसर से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, ब्रांच बैंकिंग में जाके ब्रांच हेड या अलग अलग तरीके के रोल्स लेता है. यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द ग्रोथ पाथ ऑफ अ मार्केटिंग ऑफिसर. सो फॉर दिस अगेन, जो मैं आपको बोल रहा था, ऑलरेडी मेड सम वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स का, आप जाके देख सकते हैं और वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे इनपुट्स मिलेंगे. वरना कोर्स में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं सारे क्वेश्चंस. व्हाट इज सीएसआर? यहाँ पे सीएसआर से मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बैंक्स बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं टुवर्ड्स पॉवर्टी, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सैनिटेशन. कई बारी बैंक्स कुछ कुछ सोशल इनिशिएटिव्स भी लेते हैं. तो अगर कोई नोटेबल सोशल इनिशिएटिव है जो आप रिकॉल कर सकते हैं, या कुछ आप इनोवेटिव आइडिया अपने तरफ से भी दे सकते हैं जहां बैंक्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करके अपनी इमेज बिल्ड कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरीके का बात यू कैन से. एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट हाउ बैंक्स यूज सीएसआर एज public relations and publicity tools. So how it can be used to build brand image of the bank, I've already told, PR and publicity. What next? What is more important, sales or marketing for a bank? So this is a catch 22 situation for you, a very tricky question. And you have to answer this question very carefully. There could be various answers to this question, but whatever you answer should be convincing, should be logical, right? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो I'll say we cannot see sales different from marketing. Sales is a part of marketing activity, and as the concept these days goes, that we have to take care of holistic approach towards marketing. So it's not only the marketing or the sales team which will be responsible for the sales. Everybody in the bank should be sensitized towards sales, and therefore we can have a sustenance in the long term. हम long term में तभी sustain करेंगे जब हमारी sales figures जो हैं वो अच्छे होते रहेंगे, और उसके लिए इफेक्टिव मार्केटिंग का जरूरत है. सो अराउंड दीज थॉट्स यू कैन बेसिकली डेवलप एन आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वुड यू गेट बिजनेस फॉर द ब्रांच? आप ब्रांच के लिए बिजनेस कैसे लेके आएंगे? सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बैंक, और किस तरीके से बैंक्स अपने प्रोडक्शन सर्विसेज से पैसे कमाते हैं, राइट? आई गिवन यू इनपुट्स. Banks earn through fee income, banks earn through interest income, banks also earn through brokerage income. तो तीनों इनकम कैसे जनरेट और इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट दिस, राइट? नेक्स्ट वन इज, विच आर दी मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर अ बैंक? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन से हैं बैंक के? यहाँ पर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट्स गिव द मैक्सिमम रेवेन्यू टू द बैंक. कहाँ से सबसे ज्यादा फीस जनरेट होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मार्जिन है, यू कैन टॉक अबाउट दोज प्रोडक्ट्स. हाउ वुड यू गेट न्यू कस्टमर्स फॉर द बैंक? आप बैंक के लिए नए कस्टमर्स कैसे लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, राइट? तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है लीड जनरेशन का, यहाँ बात हो रहा है किस तरीके से आप रेफरेंसेस को यूज करेंगे. सो यू कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स. नेक्स्ट वन इज, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस? दे विल अगेन ट्राई टू फाइंड कि ऐसा तो नहीं कि द कैंडिडेट वाज ट्राइंग टू क्रैक द पीओ एग्जामिनेशन, एंड सिंस ही और शी हैड अ डिग्री इन मैनेजमेंट, इन्होंने आईबीपीएस एसओ भी दिया, और ऐसा तो नहीं कि पीओ के लिए भी वेट कर रहे हो. सो दैट्स अ कैच 22 सिचुएशन अगेन. बी वेरी केयरफुल इफ यू हैव अ पीओ जॉब आल्सो लाइंड अप, राइट?
So next question is question number 20. What are your strengths and weaknesses? Now there could be multiple ways in asking about your strengths and weaknesses, but yes, sometimes panel members can be very upfront and ask directly pertaining to your strengths and weaknesses. One small tip from my side is relate your strengths to the marketing officer's job profile and the key areas that they need to work in. किस तरीके के स्किल सेट चाहिए होते हैं मार्केटिंग ऑफिसर को, उसके अराउंड आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। चलिए, वाई शुड वी सिलेक्ट यू नाउ, यहाँ पर अगर आप ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं वेल एंड गुड, तो क्यों आपको बैंक सिलेक्ट करे एज अ मार्केटिंग ऑफिसर? अगेन यहाँ पे मोर और लेस you'll be talking about your strengths only and the way you can pick up things and the way you can contribute towards the business of the bank, right? Next question is, how is your education going to be useful in this job? When they say education, they mean to say your degree, your MBA, or your understanding of marketing, and how you're going to apply that knowledge in the real world, right? So think about that, and then you can have an answer around this. Have you ever been to a rural area? So they are trying to throw you out of the comfort zone by asking that, have you ever seen how rural area is? And in case you have been, in case you get relocated or in case you get an assignment in a rural area, how would you be coping up? So you should be aware of this. Tell us about your hobbies and interests. So we have already had a detailed discussion around this in the course. And hobbies and interest, I'll just give you an idea about it. Hobbies and interest, hobbies is something that you actively pursue. Interest is something that you get to do when you have free and available time with you, right? तो आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स. व्हाट नेक्स्ट? टेल अस अबाउट योर फैमिली. अब यहाँ पे वैसे तो आपने ये इंट्रोडक्शन में ही बता देना है, बट समटाइम्स आपका जो इंट्रोडक्शन है नहीं पूछा जाता और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इन दैट केस you can tell them about the family background. You come from a business class family or a service class family. How many members are there in the family? Who are the what does your parent do? And if there are any siblings, आप उनके बारे में भी बात कर सकते हैं in this. But make sure it is concise and precise and to the point. Next question could be, tell us about your schooling and graduation. Now many a times students what they do is they just tell them कि सर मेरा schooling इस year में इस board से किया है ये percentage, graduation इस year में इस board से ये percentage. अब ये गलत approach है. They are trying to understand what is the learning that you have gained. आपको किस तरीके का एक्सपोजर मिला है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है नहीं, आप हेड बॉय रहे हैं नहीं रहे, एनसीसी एनएसएस में आपने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया, स्कूलिंग में आपने क्या सीखा, हाउ हैज स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन हेल्प्ड यू टू ग्रूम योरसेल्फ. तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप बात कर सकते हैं. What next? Where do you see yourself 5 years from now? What is your aim in life? तो 5 years from now तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला थोड़ी देर पहले, but what is your aim in life means? Now, basically, this question is pointing out at your long-term objectives, long-term goals कि भाई आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं. तो एनीथिंग बियॉन्ड मार्केटिंग, क्योंकि आपको अपना पाथ पता होना चाहिए. तो मेक श्योर इसका आंसर आपके पास दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो. व्हेन आई से क्वांटिटेटिव टर्म्स, आप एक आइडिया दे सकें कि किस लेवल पे या किस डेजिग्नेशन या किस ग्रेड या पोजीशन पे आप अपने आप को देखते हैं. और अगर आपसे पूछे मॉनेटरी टर्म्स, जैसे तो बात नहीं करेंगे, बट आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए. क्वालिटेटिवली आप बता सकें कि आपकी लाइफ कैसे बदलेगी अगर आप अपने आप को 5 7 10 साल बाद देखेंगे, तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑन दोज ग्राउंड्स. What next? Have you appeared for other exams? This is another tricky question. Be careful while answering these questions. Now, again, the answer to this question is very, very subjective and will depend on your job profile or your own profile, right? So I'll not be giving any straightforward answers for this because आप इसको गलत तरीके से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो सोच समझ के इसका भी आंसर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द गैप इन योर स्कूलिंग ग्रेजुएशन आफ्टर द ग्रेजुएशन. तो अगर आपके ग्रेजुएशन और आपके एमबीए के बीच में, आपके मास्टर्स के बीच में 2 3 साल का गैप है, या ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में बहुत बड़ा गैप है, या फिर आपने एमबीए काफी समय पहले कर लिया था और अब आपने ये एग्जाम क्रैक किया है, 4 5 साल पहले आपने एमबीए कर लिया था, तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ. देयर कुड बी सर्टेन आंसर्स टू दैट. देयर कुड बी फैमिली इश्यूज, देयर कुड बी हेल्थ इश्यूज, देयर कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज, देयर कुड बी एनी अदर इश्यूज. You could be pursuing something else, you're working somewhere else. There could be number of reasons. You'll have to see which suits you the best, right? Next question is, do you have any work experience?
ना अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है तो बट मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये अनदर ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मेरा सलाह तो है कि अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यू शुड ऑलवेज टेल देम, बिकॉज दैट एड्स अप to your knowledge and learning, right? So put it very smartly. And I would suggest that if there is any very relevant work experience that you must have had, do mention it. Mention three important international, national and state news. By saying three, I mean आपको उस दिन के या पिछले 5-6 दिन के इंटरनेशनल इवेंट्स पता होने चाहिए, मेजर नेशनल इवेंट्स पता होने चाहिए और स्टेट लेवल इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका अवेयरनेस कितना है करंट अफेयर्स को लेके, सराउंडिंग्स को लेके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Another question is, if given a chance to switch to general banking operations after a few years, will you opt for it? Now, this is another trick question wherein they'll try to gauge कि कहीं ये सही में बैंकिंग में इसीलिए तो नहीं आ रहा कि सिर्फ किसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में आ जाएं और फिर हम स्विच कर लेंगे। सो दैट इज अनदर ट्रिकी क्वेश्चन and be very very clear about how you're going to answer this question, right? Another question is, how can marketing help in profitability of a bank? तो मार्केटिंग से प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की कैसे बढ़ेगी? वन आइडिया दैट यू कैन थ्रो अपॉन इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। Another is that you can talk about retaining customers for a long time. Another idea is about generating more income from the same customers. Another idea is that you can talk about satisfying the consumers and giving them the best possible services. तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जहां पर द कस्टमर इज गोना स्टे विद द बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम and thereby giving a chance for the bank to become more profitable. Now the question is, what is the difference between disinvestment and privatization? क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का बात हो रहा है, आईडीबीआई को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच में फर्क, I'll just give you an idea about it. Privatization is when the organization changes hands. Majority stake पहले गवर्नमेंट के पास था तो पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक के पास आ गए तो प्राइवेटाइज हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट इज के गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक तभी भी रहेगा बट जे सेलिंग अ पार्ट ऑफ इट, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्राइवेट बैंक्स आर मोर एफिशिएंट? तो यहाँ पर भूल के भी ये मत कह देना कि प्राइवेट बैंक्स आर मोर एफिशिएंट और दे आर मोर प्रॉफिटेबल, दे हैव गॉट बेटर मार्जिन। ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी diplomatic while answering such questions, right? So be well prepared. Another question is, what is the use of? अब ये questions बहुत सारे important हैं. Now banks these days are using enterprise resource planning, they're using various database management systems, they're using IT, they're using artificial intelligence. मेरा बस कहने का मतलब है कि जो भी latest technology tools banks use कर रहे हैं, उनका क्या use है, उनका क्या benefit है in marketing. तो आप जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि ईआरपी हो गया, सीआरएम हो गया, एक कंसेप्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, और यूपीआई को बड़े अच्छी तरीके से बैंक्स यूज कर रहे हैं, आरडीबीएमएस और डेटा माइनिंग भी आज की डेट में बैंक्स कर रहे हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स, राइट? How would you motivate rural customers for banking services? So this is a question that is related to financial inclusion in a way. So also go through financial inclusion and how banks are moving towards financial inclusion and thereby increasing their customer base. So you can talk about that. How can a bank differentiate itself from other banks? तो किस तरीके से आप एज अ बैंक डिफरेंशिएट करोगे बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक से या बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक से, कैसे compete करेंगे? तो compete करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। And one input I can give you over here is, since banks are into services, so you can differentiate on terms of the services being provided, right? तो आप सर्विस डिफरेंशिएशन करके इस काम को कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि एटीएल एंड बीटीएल मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं? तो एटीएल आर अबव द लाइन एंड बीटीएल आर बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज, आपने पढ़ा होगा कोर्स में, अच्छे से करके जाइए और इसके कुछ एग्जांपल्स भी करके जाइए, राइट? अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैनवसिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स? कैनवसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें नए कस्टमर्स जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ट्राई नहीं करा होता है, उनको जब हम केटर करना चाह रहे हैं, उनको हम उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कैनवसिंग करते हैं हम। और अब जो शुरू हो गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कैनवसर्स को भी
कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट करना शुरू कर दिया है, या उनको थर्ड पार्टी के रोल्स में लेके आए हैं और कैनवसिंग उनसे कराते हैं फॉर लीड जनरेशन। तो दैट इज द कंसेप्ट। सिमिलरली, व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग आपको पता ही है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल यू हाउ विल यू जनरेट लीड्स फॉर द बैंक। पिछला क्वेश्चन था हाउ वुड यू जनरेट बिजनेस फॉर द बैंक। अभी आ गया लीड्स कैसे जनरेट करेंगे। प्रोस्पेक्ट्स एंड लीड्स का बात हो रहा है कि जो अभी हमारे कस्टमर्स नहीं है बट दे कैन बी फ्यूचर कस्टमर्स, हाउ वुड यू जनरेट the database for such customers, right? So you can take references, you can do canvassing, you can get into cold calling, you can use data mining. इस तरीके की बात आप कर सकते हैं, right? Another question is who are the most profitable customers for the bank? तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किन कस्टमर्स पे आप फोकस करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। हाउ डू आइडेंटिफाई दैट गिवन एन अकाउंट, given a database of 100 200 customers, how will you स्क्रीन टॉप 20 टॉप 30 कंज्यूमर्स कस्टमर्स फॉर द बैंक जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक। तो ये मेरे को लगता है पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसी में शायद रिपीट हो गया, नो वरीज। तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में आप बात कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड लास्टली, हाउ डू बैंक्स मेक मनी। तो बैंक्स कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं, बैंक्स कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बैंक्स आपकी सैलरी कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, राइट। यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, एंड इफ यू think that this video has been useful and this session has been useful to give you good insights and good tips and good inputs to prepare for the interview, don't forget to like this video and also do please subscribe JC Academy channel and press the bell icon as well. We will be coming up with more such videos in future. And here is a bonus question. How will you retain customers? कस्टमर रिटेंशन इज अ बिग चैलेंज। तो अपने कस्टमर्स को आप अपने पास लंबे समय तक कैसे रखेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। जाते जाते स्मॉल रिमाइंडर, इंटरव्यू कोर्स इज लाइव, यू कैन चेक द कोर्स डिटेल्स इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन below, and I have already given you an idea about what is on offer, right? Do check it out. Till then, bye bye, God bless you, don't forget to subscribe, take care.